चीज है. So DNA modifying enzymes. So these enzymes, they modify DNA. Somehow they change something on the DNA. Therefore, they are known as DNA modifying enzymes. Okay. So restriction enzymes are modifying enzymes, but we studied about restriction enzymes. Now we have to study about other modifying enzymes which are present. We have to study about them. What are they? Other कौन सा है? আর কি আছে? কেউ বলতে পারো, নাম বলতে পারো? মডিফাইং এনজাইমস নেম? লাইগেজ, পলিমারেজ, আর any more names? Ligase is right, polymerase is right. Nuclease, kinase, okay, well, you can say, you can call kinase. Yeah, there are DNA kinases hota hai, phosphorylation hota hai. Phosphatase, methylase. Protease to protein ko marta hai, DNA ko nahi. It's not a DNA modifying enzyme, it's a protein modifying enzyme. Huh? जोरे जोरे क्या काइनेज? हेप्टो, जोर से हेप्टोकाइनेज, वो क्या है? हाँ, हेक्सोकाइनेज तो ग्लूकोज को करता है, डीएनए को तो नहीं. ओके, एनीवे. Online, are you able to see it? Yes, sir. Okay. So first open Introduction to DNA Modifying Enzymes. Okay, introduction to I have told a lot. Topoisomerase, yes. Gyrase, topoisomerase, shop. So the first thing, restriction enzymes, endonuclease. We have studied about it. Let's leave the restriction enzyme. Ye ho gaya. Let's go to DNA ligase. Number 2. Page number 2 mein aao. Page number 2 se ekdam page number 3 mein aao. Can you see the photo? You see the DNA strand? 3' OH. And you have another DNA strand which has got 5' OH. So that 3' OH and 5' OH, they join and form phosphodiester bond. Okay. What DNA ligase does is it takes a molecule of ATP, energy, releases 2-pyrophosphate, and it forms cyclic AMP. It forms AMP. ATP से AMP, मतलब 2 phosphates are getting out from ATP. AMP is remaining. So double energy लेके a new 5', 3' phosphodiester bond is joined. So if you cut a DNA, the restriction enzyme, it cuts at this phosphodiester bond. This bond is the bond which is broken. ठीक है ना? और कहीं पे काटता नहीं, only this bond. Restriction enzyme. So ligase, what it does, it उसको जोड़ देता है. Nucleus काटता है, ligase जोड़ता है. It needs one molecule of ATP. Then we go to DNA polymerase. Go to figure 3. The first DNA polymerase which was identified was DNA polymerase 1, Roger Kronberg. It's also known as Kronberg enzyme.
from 10,000 liters liters of bacteria. मतलब something like 10 to 100 kilos of bacteria. You say you got only 1 microgram or of DNA polymerase 3. Not polymerase 3, polymerase 1. That was the first polymerase to be discovered. Later, it extended DNA. Later, it was found out that the real polymerase was DNA polymerase 3. DNA polymerase 1 was just for an additional support. Okay. So what it does, you see this deep blue, it is the template strand. Picture में देखो, picture में. And light blue is the new strand which is being synthesized. And नीचे देखो a nucleoside triphosphate, एक थाइमिन वाला ट्राइफॉस्फेट, शुगर ट्राइफॉस्फेट दिख रहा है ना नीचे, ट्राइफॉस्फेट विथ टी, वो आके जुड़ता है डीएनए पॉलीमरेज 3. ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट को उड़ा देता है और एक फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में बनता है. एंड उसके बाद देखो 3 प्राइम एंड में एक वो टी जुड़ गया है. इसमें क्या था, 3 था, अब 4 हो गया. सो पॉलीमरेज लाइक दिस, ऐसे करके कीप्स ऑन सिंथेसाइजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगाते लगाते बढ़ जाता है. ठीक है. So this is how polymerase works. डीएनएस फॉस्फेडाइस्टर काट देता है. ठीक है. डीएनएस जैसे रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में डीएनएस पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देता है, बीच बीच के काट कूट के. ठीक है. इट नीड्स मैंगनीज एंड मैग्नीशियम. 2 तरह का क्लीवेज होता है. मैंगनीज में एक तरह का होता है और मैग्नीशियम में 2 तरह का क्लीवेज होता है. नाउ गो टू figure 5. Kinase and phosphatase. What does kinase do? Phosphorylates. Phosphatase क्या करता है? Removes the phosphate. ठीक है. Sometimes if DNA is phosphorylated, it becomes inaccessible to transcription factors. Especially what happens when histones are phosphorylated, histones, it leaves the DNA. And the DNA becomes accessible to transcription factors. But when this phosphate is removed by phosphatase, it's inactive. Okay. So you can, by phosphatase and kinase, they regulate the activity of proteins associated with DNA. मिथाइल ट्रांसफरेज सबसे बड़ा काम है. देखो फिगर नंबर 6. सैम सैम को देखे हो? सैम, व्हाट इज सैम? एस एडिनोसाइल मिथियोनिन. ठीक है. सो इट हैज गॉट अ मिथाइल ग्रुप. तो देखो पेज नंबर 5 में डीएनए 5 प्राइम जीएटीसी 3 प्राइम मिथाइलेटेड, वो बन जाता है क्या है, 5 प्राइम जी मिथाइलेटेड एटीसी. सो दिस इज the guanine is methylated, 5 prime cap methylated. So methyl donor is SAM. Function of SAM is essentially क्या है? function of SAM methyl group transfer. Methyl group अगर DNA में, if DNA is methylated, transcription factors cannot access it. जैसे फिगर 6 में देखो, साइटोसिन SAM क्या क्या एक मिथाइल ग्रुप हो गया, 5 मिथाइल साइटोसिन बन गया. This DNA is modified DNA.